Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss centrioles. So let's move to the whiteboard. So dear students, centrioles. That is important regarding short question as well as long question. इसमें से कुछ MCQs भी आपसे पूछे जा सकते हैं, वो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे. So centrioles basically these are there are two non-membranous microtubular structures present at the exterior of nucleus. Clear? So, dear students, there are two non-membranous. Non-membranous का मतलब है कि ये सिंपल माइक्रोट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना हुआ है. इससे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था. उसमें इन द साइटोस्केलेटन और माइक्रोट्यूब्यूल्स में बताया था कि microtubules are involved in the formation of cilia, flagella, basal bodies as well as the centrioles. So these are microtubular structures. So microtubular structure means they are made up of tubulin. They are made up of tubulin protein. Clear? अब डियर स्टूडेंट्स एक और टर्म है यहाँ पर दैट इज centrosome. So basically a pair of centrioles enclosed in a membrane are collectively called centrosome. तो डियर स्टूडेंट्स एक्चुअली सेंट्रोसोम जो है दैट इज द ऑर्गेनल, और उस ऑर्गेनल के अंदर मौजूद है दो सेंट्रियोल्स जो कि नॉन मेम्ब्रेनस है. ये कॉन्सेप्ट आपने बिल्कुल क्लियर रखना है. सेंट्रियोल्स दे आर नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. जैसे कि लेट्स सपोज ये दो सेंट्रियोल हैं जस्ट मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन और इसके अराउंड है मेम्ब्रेन, तो ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाएगा centrosome. That is called as centrosome. A pair of centrioles enclosed in a membrane, cell membrane, that is called as centrosome. Okay. Now, dear students, about the centriole, there is another information. The centrioles are placed at right angle to each other. Right angle means the 90 degrees. At right angle
to each other. मतलब कि इस तरह से नहीं पढ़ा हुआ, अपेयर इस तरह से नहीं पढ़ा हुआ, बल्कि एक सेंट्रियोल इस तरह से है तो दूसरा इस तरह से, एट राइट एंगल टू ईच अदर दे आर प्रेजेंट. Okay, that is an MCQ. Now their composition. The centrioles are made up of an array of, array means arrangement, of 9 tubules which further consists of 3 tubules making a triplet. Clear? Or we can say that the centrioles are made up of 9 triplets of tubules, basically the microtubules. Clear? So ये इनकी मतलब कि composition है. Now look at their structure, how they are present. So this is a cell, and here is its nucleus that contains a nucleolus and chromatin bodies. Over here, to the exterior of the surface, there is, that is plasma membrane. That is nucleus, and this is a pair of centrioles. Here, if we look them at in a microscope, how they look like. So these are 9 microtubules which are further composed of triplets. So dear students, this is a microtubule, और आप यहाँ पे देख सकते हैं. I'm going to list them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Clear? So these are the 9 microtubules which are further composed of triplets. इसमें से एक triplet को थोड़ा सा enhance करके देखते हैं. So 1 microtubule, its second microtubule,
and the third one. So this one is called as a single triplet. ये एक triplet है dear students. This is a single triplet. और इसी तरह से ये तीन, इसी तरह से ये तीन, इसी तरह से ये तीन, ये तीन, इस तरह से ये ट्रिपलेट्स जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है. सो दिस इज वन ट्रिपलेट, द सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड एट एंड नाइन्थ. तो ये 9 ट्रिपलेट्स होती हैं और इन दिस इज द वन एंड ये इसकी कंपोजिशन होगी. नाउ हाउ दे आर प्लेस्ड विद ईच अदर एज वी हैव talk that they are present at a right angle to each other. ये एक दूसरे के right angle पे मौजूद होते हैं. So let's suppose this is one microtubule. Clear? So how it is present? The second one is present like this, in this fashion. Like this. Like this. So this is what we call at right angle to each other. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, this is called the right angle, 90 degrees. This one is right angle, or this one is 90 degrees. Clear? 90 degrees, 90 degrees. ये एक दूसरे के बिल्कुल इस तरह से right angle पे पड़े होते हैं. Clear? And now what happens? तो ये आपको इसका structure clarify हुआ. Means कि ये 9 tubules हैं which are further composed of triplets. ये एक triplet है, इसी तरह के 9 triplets हैं. 9 triplets का मतलब है we have got 9 multiplied by 3. मतलब कि एक centriole के अंदर one centriole consists of 9 microtubules which are further composed of 3 tubules, 3 further tubules making a triplet, so it becomes 27. It means कि एक centriole के अंदर कितनी tubules मौजूद है? 27. और अगर हम बात करेंगे a pair of centriole means the centrosome. In a centrosome there are 9 into 3 and plus 9 into 3. That is equal to 27 plus 27. It becomes 54. Okay? So in a pair, एक centrosome के अंदर there are 54 the tubules which are present in a pair of centriole or centrosome जिसको हम कह रहे हैं. Okay? Now, as functions. So as far as the function then concerned, the major and the basic function is the centrioles are involved in the formation of spindle fibers. In the formation of spindle fibers. Dear students, यहाँ पर एक आपको information देता चलो. जो spindle fibers यहाँ से निकलता है, यहाँ पर basically from each centriole
there arises three set of microtubules. यहाँ पर 3 सेट बनते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, जिनको हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। 3 सेट्स हैं, ठीक है। और वो 3 सेट कौन कौन से हैं डियर स्टूडेंट्स? These sets include aster, number 2 kinetochore fibers, and number 3 the polar microtubules. Clear? The polar, जो कि पोल्स के ऊपर मौजूद है। Let me show you in the diagram. Aster, the polar, and the kinetochore, to which the chromosomes are attached. Now I'm going to label it. So these pink colored fibers, they are the asters. इनको एस्टर्स कहा जाता है। ये पीछे की तरफ फैलते हैं और जाकर सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। और यहाँ पर जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ, ये नीचे और ऊपर, दे आर कॉल्ड एज अ पोलर। और जो दरमियान में जो अटैच है विद द क्रोमोसोम्स, दीज आर द kinetochore. So in short, they are making the mitotic apparatus. So they are involved in the formation of mitotic apparatus. So that's why they are very, very important regarding the cell division. Clear? तो cell division में खास तौर पर जब एनाफेज होगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी. These microtubules will contract and they will be responsible for the equal distribution of the chromosomes and the chromatids. Clear? During anaphase, that is the third phase of karyokinesis, the microtubules means the spindle fibers which are kinetochore contract and are so responsible for equal distribution of chromosomes and chromatids. So they are very, very much important during the cell cycle. इसकी मज़ीद डिटेल्स आप सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 21 सेल साइकिल में आप इसको पढ़ेंगे. Another very important thing that is related to during S phase of interphase, which is a phase of cell cycle, the centrioles are duplicated and during prophase one copy moves to the opposite pole, to the opposite pole. तो एक यहाँ पर आ गई कॉपी, एक यहाँ पर. ड्यूरिंग इंटरफेस ये इनकी डुप्लीकेशन हुई थी. आमतौर पर जो हम बात करते हैं दैट इज ड्यूरिंग द एस फेज, द सिंथेसिस फेज, जिसमें क्रोमोसोम नंबर भी डबल हो रहा होता है, तो उस दौरान ये हो जाता है. क्लियर?
and they are also involved in location. Remember this thing, location of furrowing. हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में बात की थी क्लीवेज फरो बनना ड्यूरिंग सेल डिवीजन और ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। तो वहाँ पर माइक्रोफिलामेंट्स वो रिंग बनाती हैं एक्टिन और मायोसिन से मिलकर, और वो उसको सेंटर में प्रीवियस लेक्चर में आपको याद हो। लेकिन उसको लोकेट करना कि कहाँ से वो क्लीवेज स्टार्ट होगी, दैट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रियोल्स। सो लोकेशन ऑफ फरोइंग, क्लियर, the location of cleavage furrow, that is their responsibility. And also they are involved in formation of cilia. Clear? They are also involved in the formation of cilia in the ciliates. So dear students, hopefully आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।